Hello my sugar pies, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing great and safe. So today I'm going to share this look. So let's go. I'm starting with Neutrogena moisturizer. So next I'm going to use the inside color corrector. It is easy to blend with fingers. Next, for the concealer, I am using Maybelline concealer in the shade of Deep. It is an amazing concealer and it is so lightweight and it it blends like butter, man. So मैंने अपने हाई पॉइंट्स और अपने डार्क स्पॉट्स को भी मैंने इसके साथ कवर कर लिया है. Then next I am going to use Lakme Invisible Foundation in the shade of 04. It is a beautiful foundation for everyday makeup look, and don't forget to apply it on your neck. With the help of damp beauty blender I am going to blend it, and ये बहुत अच्छे से blend भी हो जाता है, and love the finish of it. And it is one of my favorite foundation, and it has sheer to medium coverage. Next, to set my concealer I am using Lakme 925 compact powder. इसको डैप करते हुए मैं अप्लाई करूँगी ऑल ओवर फेस पे. देन मैं बेयर एनाटॉमी की पैलेट में से ये बर्न ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है, इसको मैं अपनी आईलाइट पे अप्लाई करूँगी. लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट्स कम आउट मैन. आई लव दिस शेड. Then I am using Faces Canada Ultimate Pro Intense Gel काजल. इसको अप्लाई करने के बाद इसके ऑपोजिट साइड पे ब्लेंडिंग टिप दिए. लुक एट दिस. इसकी हेल्प से इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ना, जिसको भी स्मोकी आईज करना डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ये इसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है. देन मैं अपने लैसेस को कर्ल करूँगी 3 to 4 टाइम्स लेस कलर से. ये विगा का है. एंड देन मैं मस्करा अप्लाई करूँगी. मेरी फेवरेट मस्करा मास्क की डबल ट्रबल मस्करा. ये टू स्टेप्स में ऑलमोस्ट आती है. कि फर्स्ट स्टेप है, इसको हम अपनी लेंथ को लाइक लेंथन अप कर सकते हैं, और सेकंड है वॉल्यूम. So next I am using my Glam की lip and cheek tint for the blush. It is a very beautiful color and it is so natural finish like cheeks. Look at this, बहुत ही मस्त लुक दे रहा है. So highlighter के लिए I am using NY highlighter palette. It is very sheen and मैं अपने high points को highlight करूँगी with the help of NY highlighter palette. So look at this. Next, for the lipstick I am using my Glam lipstick in the shade of wine, but इतना अच्छा लग नहीं रहा है. Look at this. I don't like this with my ये black outfit, so मैंने ये wipe out कर दिया. Then I'm using Inside Cosmetic की ये Sugar Plum shade, which is a complement my overall look. Look at this, how beautiful it's come out. Next I'm using Swiss Beauty का मेकअप फिक्सर विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर. मैंने अच्छे से टैप कर लिया है मेरे ओवरऑल मेकअप लुक पे. सो यस, दैट्स इट. And this is the final look.
and incomplete without bindi. So मैंने ये small black bindi लगाई है and doing my hair, and it's done, man. So hope you like this video and thank you for watching. Bye bye.